market would go down much more. I thought the oil prices would go up much more. I said, but we have no choice. Whether it does or doesn't, I have to do what's right. We can't let them have a nuclear weapon. So I called in Scott Bassett and all of my people, mostly my financial people, and I said, all right, folks, congratulations. We just hit the highest price in the history of the stock market. So I said the Dow would never hit 50 during my 4 years because it was too much of a raise. They thought 6, 7 years out, maybe it could hit 50,000. They said the S&P could never hit 7,000, right, Scott? That would be even more unlikely. Maybe at the end of the 4th year, but probably not. It would be 5, 6 years out. And we hit 50,000 on the Dow before the end of my first year. We hit 7,000 on the S&P before the end of my first year. The stock market is rocking and rolling. Your 401ks are at the highest they've ever been. I don't have to list. I don't know how the hell you could be doing badly. But your 401ks are setting records. I have people coming up to me and saying, you've made me a hero to my wife. You've made me a hero. I've had numerous policemen. I had one guy from years ago because I did the same thing. We had the greatest financial markets in the history of our country in my first term. We're blowing it away now. We're blowing everything away. There's never been a country this successful in that sense before. But now I said, okay, you ever do this? Well, you're doing so well. I said, so we just set every record. We have the highest stock market in history. We have things that just go. And by the way, there are more jobs today in our country than at any time in the history of our country by far, right? So, but we have to think a little long term. And I said to Scott and Howard and all of the people that worked for me, great people, Jameson, Greer, all of them, I called them in and I said, fellas, congratulations. We have the highest stock market we've ever had. Everyone's doing great. Oil prices were very low. They were 60 and 70. You were buying oil for $2 and even less. Remember, just a couple of months ago, you were at $2 and $1.85. In Iowa, it was $1.85 a gallon. I said, congratulations. Now I'm going to upset the apple cart for you because we have to take a little journey down to a beautiful country known as Iran. And we have to make sure that they don't have a nuclear weapon. We stopped them with the B-2 bombers. If we didn't do that, we would have had a nuclear weapon. Israel would have been blown to pieces. The Middle East would have been blown to pieces. I think Europe would have been blown to pieces. But under what we were doing, I said, look, we're going to have to make this journey. So it's almost like we built up this great thing, and then I said, now we have to break the eggs a little bit, and we have to go and do it. And the only thing that I'm surprised is that I really thought oil would be, Dr. Oz, we talked about it. I thought oil would be much, much higher than it turned out to be. I mean, it's not low. It's certainly not low. It's going to come crashing down as soon as this war is over, and they're getting decimated. They have no Navy. They have no Air Force. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. They have no leaders. Their leaders are all gone. It's very sad, very fine people. But with all of that, I said we have to do it. So I think you understand. But I am surprised. I thought the stock market would go down by 25%. I thought that oil prices would be at much higher than they are right now. They're not nearly as high as I thought. And we're going to, look, we're winning so big. We're winning again. Their Air Force is gone. Their ships are gone. They have a Navy, 159 ships. That's a pretty good Navy. Within the first week, 159 out of 159 ships are right now lying at the bottom of the sea. Their Navy is gone. And we're discussing, I spoke to them today, we're discussing, it's a little hard to figure out who their leaders are, frankly. You know, their leaders are gone, the first set is gone, the second set is gone, Khomeini was gone, and they were pretty evil people. Not pretty evil, they were evil. They killed 42,000 protesters. 42,000! And in a period of 2 weeks, they killed 42,000 protesters. But we had to get this done, and we're really doing well. We're just winning. If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years.
Under 4 years of Crooked Joe, I go crooked and sleepy. Which is better, Sleepy Joe or Crooked Joe? Ready? Sleepy Joe. Crooked Joe. I love it. It's free polls. You know, if I went to a pollster, they're all phony. If I went to a pollster, I'd pay $1 million for that question. Give me $1 million, sir. And then they don't go to interview. They just put it down, whatever they want, you know? They say, we scoured the countryside. They didn't scour. They sit in their room watching television. They say, oh, let's give Trump a little bit of an advantage. It makes him happy. Under 4 years of Crooked Joe Biden, the average 401k rose at the rate of $875 a year. Okay, that's something, a little raise. But you know why he rose? Because of me with the 4 years that we had. Because after that, there was nothing. He would have gone down. They took over the momentum of what we created in the first 4 years, which was incredible. Under Trump, so it's $875. Under Trump, the number 875 is the rise $30,000. So it's 875 versus 30,000. Contributions to the millions and millions of Americans who lack employer-sponsored plans. Obviously, some of you. And starting next year, every citizen will be able to go to TrumpIRA.gov and sign up for a high-quality, low-cost IRA so that everyone can benefit from the rising stock market. Go sign up. These are all things that people have been talking about for years, right, Scott? They've been talking about them for years. In 4 years, the Biden administration got less than $1 trillion of new investment. So in 4 years, he got much less than $1 trillion people investing in the country, other countries, other people. In my first 11 months, we secured commitments for more than $18 trillion now pouring into our country from all over the globe. Think of that. Think of that. Less than $1 trillion in 4 years, and 11 months of 12th month hasn't come out yet. We've been that long enough. But in 11 months, $18 trillion. So that's 18 times more. But think of it. It's really almost 100 times more if you really multiply it out properly. A short time ago, we were a dead country. Now we're the hottest country anywhere in the world. Congratulations. Core inflation has dropped to a 5-year low, and I tell you, the only thing, we got a little raise with gasoline. It's going to come down lower than what it was. Don't forget, we had that gasoline down to $2 and below $2 in many cases. It's going to come tumbling down. There is so much oil out there. It's pent up. It's locked up in the Strait of Hormuz, a beautiful place. It's, I think they have close to 400 ships loaded up with oil. When all of that gets released, when all of that comes out, these people tried to hold up our country for years and years, the world, by closing up the Strait of Hormuz. When all of that stuff comes out, you're going to see prices dropping on gasoline like you've never seen, and all of that, electricity, gasoline, anything having to do with energy. Grocery prices are way down. Used car prices are way down. Look at eggs. Eggs are down by 4, even 5 times. Remember when I took over, eggs were so high? Remember my first news conference as president of second term? 2 days in, I said, ladies and gentlemen, do you have any questions? What about eggs? I said, what? Eggs, egg prices are 4 times higher than they were a year ago. I said, I just got here. I've only been here for a day and a half. And we had a problem with eggs. The prices were through the roof. I got them down to now they're lower than they were at the lowest point 4 years ago. Think of that. But I got them down. Does anybody write about it? No. That's why I like doing speeches. You know, they don't write about it, so I do speeches. That way I can talk about it. Sometimes you got to do it yourself. Earlier this year, I directed Fannie and Freddie to buy, you know what that is? Well, where's Bill? Where's Bill Pulte? He's around here someplace. He's done what a great job. He's created $1 trillion value. Look at him over there. He's jumping. Smart guy. During my first term, I was offered, sounds like a lot of money, but it's very little compared to what, less than $100
million to buy Fannie and Freddie, and I said, nope, I don't want to sell it. Don't sell it. They wanted to sell it so badly, and now it's worth over $1 trillion. If I would have sold it, I would have felt like a schmuck, to be honest. It's worth over $1 trillion. What is it, about $1 trillion now, right? He says higher. No, we could have sold it. We could have given it away for nothing, practically nothing. So I directed Fannie and Freddie to buy $200 billion in mortgage bonds, bringing interest rates plummeting down from nearly 8% under Sleepy Joe and 6% even lower. And don't forget, we had a hostile Fed. We had a guy, too late. We call him too late. He's too late with interest reductions. Jerome Too Late Powell. We had I haven't figured out, is he a bad guy or a dumb guy? But it doesn't matter. The end result, he's either dumb, bad, maybe he's a combination of both. But in any event, because rates, we would have had them even lower, but we've done great considering that we're fighting. Now we have a great Federal Reserve chair coming in, and he's going to be fantastic, Kevin Warsh. We've reduced the annual cost of a typical new mortgage by $4,000. Think of that, $4,000 a year after decades of other countries stealing our jobs and plundering our wealth, taking advantage of our country like we're a bunch of fools. Thanks to our strong policy on tariffs, I love those tariffs. We cut our gaping trade deficit by 55% this year alone. So we had a trade deficit was massive when I took over, and if you cut it by 1%, 2%, you're considered like a genius. I cut it by 55%, and next year is even better. And that's despite the Supreme Court making me do the tariffs a different way. I cannot believe they did that, but they did it. They shouldn't have done that, but it doesn't matter. I'm doing it a different way, a little more work, a little more time. Pay back $159 billion of the money that you got in. But we're doing it. It's actually very solid. It's 100%, can't be challenged. And we informed the very beautiful country of Germany that because of the fact that they and other European nations have not adhered to our trade deal. They haven't adhered to our trade deal. We have a trade deal that Scott and me and Howard and all our great people, Jameson, we all did a great trade deal, but the European Union has not adhered to it. So we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks. Knowing that if Mercedes and BMW and the truck companies and all of the people out there that send stuff in and didn't pay anything for years, they ripped us off. They took our jobs away from us. Not anymore. It's the opposite. They're all coming back. You know, factories are pouring back into our country, but they're all coming back. But we informed them that we're going to charge them, we're going to increase their tariff to 25%, knowing that if they build their plants in the United States, there is no tariff. They have to hire our great American workers, and there is no tariff. Think of it. And we've added now, we are now building AI plants, all of everything. But we have part of that $18 trillion. But we have more construction going on and what they call plant and equipment than we've ever had before, and car plants. We had a period of time that for 25 years we didn't build one plant. They took our car industry away. It went to Germany, Japan, Mexico, Canada. It went to the European Union like crazy. Germany, think of it. It went to the European Union. We went for a period of almost 30 years with barely building a plant. Now we're building more plants for cars and trucks than we've ever built in the history of our country, including prime time from many years ago. They're all coming back because they don't want to pay tariffs. Very simple. Very simple. They don't want to pay tariffs. If you don't want to pay tariffs, that's fine. Build your plant here. Build it in Florida. I don't think of you too much as you don't need the cars. But build it in Florida. Any place in the United States is okay with me, but they're building them all over our country. We added 186,000 private sector jobs in March. Jobless claims just hit the lowest level since 1969. Think of it, jobless claims. So, since 1969, the lowest level since 1969. And more Americans are working today, as I said, than at any time
in the history of our country by far. It's not even close. And with our no tax on tips, no tax on overtime, no tax on Social Security, we're doing something that has never been done. And the consumer, which is you have more money to spend than you have in many, many decades. Very importantly, for our great seniors, we are, I hate to mention this, it's so negative. It's called the estate tax, because nobody in this room will ever die. But just in case you should, if you have children that you love, it's very important. If you don't love your children, then it doesn't matter too much. Who cares? Oh, I know some that won't leave their kids. They hate their kids, but, you know, these are bad people. They're usually very wealthy, too. I don't know what that's all about. But we have no inheritance tax. We have no death tax. Who really it affects is the small farmers, medium-sized farmers. They're called land-rich, cash-poor. You know, that beautiful land that's very valuable, but they don't make tremendous income. And they die, they leave it to their children. Their children goes out to the local banker, borrows money to pay the tax because the tax was 50% and more. And they end up losing their farm. In many cases, they love their life. They commit suicide. It's a crazy thing. They lose their whole life and they commit suicide. There's no more of that. So when you die, you leave your farm or your small business to your children. You have no estate tax. You have no death tax. I think that's a big deal. To me, that's a big deal, right? Byron, that's a good one, right? That's good. You know, you want to lead your way of life. You don't want to be forced to sell your farm. Sometimes you can't sell your farm for what they think it's worth, and you have nothing but trouble. What a problem it was. You don't have to worry about it anymore. We made interest on new car loans tax deductible, but only if you buy a car that's made in America. Otherwise, we couldn't care less. That's a big deal. So that you go out and you borrow money to buy a car, and, you know, you paid interest, you didn't get, now you get a deduction. That's like 40, 50%. It's like a phenomenal thing. You get 100% deduction on interest. So the interest payments that you make to the bank for the car loan, you're able to deduct that from income tax. Now, it has to be made in America. So go buy American cars or cars that are made in America. And we also created the brand new Trump accounts along with a really fantastic family, the Dell family. Have you used their computers recently? Susan and Michael Dell, they're amazing people. He put up $6.25 billion. A lot of people said, I'm going to match him on the 250, but even the 250 is a lot. Think of it. He was the first one. He bought $6.25 billion of these accounts for children all over the country. And it was just announced this morning that it's setting records, so that, you know, when your beautiful baby, we have an automatic $1,000 contribution for every newborn child, and it allows everyone to contribute to a tax-free savings account for your grandchildren. A lot of people are buying it for their grandchildren to benefit them, so that after they turn 18, they could have $100,000, $125,000, $150,000, depending on what goes on, and they can be sort of rich. And it's an amazing thing, and it's like a wildfire. It's doing so great, right, Scott? It's been really an amazing thing. And with us today is a grandmother who lives in the Villages named Mary Alice. After a long time in the Michigan real estate and automobile industry, she and her husband retired to the Villages. And thanks to our great, big, beautiful bill, I love that bill. You know, we have 4 years worth of stuff. That's why we call it the great, big, beautiful bill. We were going to have 19 separate bills. And I said to Mike Johnson, John Thune, I said, fellas, the Speaker of the House, head of the Senate, I said, let's try for one big, beautiful, because I don't know, these Democrats are crazy. And it was early. We had a little bit of a honeymoon, just a little tiny bit. I said, let's see if we can get everything in one bill. And everyone said, no way, you're not going to do it. It's the greatest, it's the biggest thing ever passed in the history of our country, the great, big, beautiful. And it's mostly, it should be called the great, big, beautiful tax cut bill.
But also we have tremendous regulatory cuts, and that's why your jobs are so good, because all of these people, small businesses, medium-sized businesses, everything, they're able to take regulations with a little bit of a grain of salt. It's not going to put you out of business. There are tremendous regulation cuts, and it's really been amazing. So they just received a tax refund of double the size of anything that they've ever gotten. Think of this, Mary Alice, for years she's gotten peanuts, and now she's gotten a tax of double the size, and in many cases 4 or 5 times the size of anything she ever got before. So Mary Alice is now considered a rich person. Come on up, Mary Alice, say a few words. Come on up. Oh, look at her. She looks good. She's a rich woman. Come on, Mary. Thank you, President Trump. It's such a pleasure to meet you. Hey, wait, let me get this out. You want me to get that out? Wait. Oh, yeah, because I'm really short. You can, I think you'll be good. Hi, everybody. First of all, I would like to thank President Trump for everything he's done for all of us. And the big, beautiful bill helped my husband and I so much this year. We were so shocked when we picked up our tax return and the accountant told us how much money we were getting back. We were just thrilled. It was double what we thought we would get. We ended up using some of that money to pay for a new roof. Now, we all know we live in Florida and we all need roofs. So we were able to use some of that money for the new roof, and we're thrilled that we were able to do that, and we didn't deplete our savings account. So and this is all because of the no tax on Social Security. And, you know, we live on a income that's fixed. And so we have to be careful how we spend our money. And thanks to President Trump and his administration, we've been able to live a great life here in Florida. So thank you, everyone. Thank you, President. That's so beautiful. Thank you. Thank you, darling. Careful, doing that really. Thank you. Wow. That's better than I can do, I'll tell you right now. No, it's a great story. Thank you, Mary Alice. You're really something special. Thank you. Congratulations. But never forget, every single Democrat in Congress voted against no tax on Social Security. They voted against it, every single one. We didn't get one vote positive because they're just like a sick unit of people. Just like the State of the Union speech. I introduced people, the mother of somebody who was slaughtered by an illegal immigrant that came in, slaughtered so horribly, and please stand up. And the mother stands up. She's beside herself. The Democrats are sitting here. They didn't move. They're just sitting here, no. Just sitting here long fast. The Republicans are going crazy there. They're screaming, and they love, you know, they love the woman that they wouldn't clap, or the helicopter pilots that did so well in Venezuela, a great, incredible military achievement. And he was shot in the legs, bringing down a lot of men in the helicopters, a big Chinook. And then he was shot in the legs, and you operate those things with the legs more than anything else. And he was very badly hit hard in the legs, and he brought that helicopter down, and then he says, take over, because I'm going to be passing out now, after it was perfectly landed in exactly the location they had to be. Otherwise, we could have had a problem like Jimmy Carter had. You remember that problem with helicopters crashing back and forth? It was not good, but that was Venezuela. How good did that work out, right? And we introduced him. Handsome guy, beautiful looking guy. We introduced him. We gave him the Congressional Medal of Honor. That first time it's ever been done in the State of the Union. We gave him the Congressional Medal of Honor. And the Democrats sat there like a bunch of dead people. They didn't move.
And I called them out. I said, you people are crazy. There's something wrong with you. But they voted against income tax cuts for seniors. They voted in favor of the largest tax hike in the history of our country. They wanted the largest tax hike in the history of our country. They also created the catastrophic inflation that I told you about, worst really in our history. If congressional Democrats had their way, Florida seniors would be paying higher taxes, higher prices, while Republicans have given you much lower taxes, much lower prices. You know, use the word affordability, but I was the one that received these high prices. You know, it's amazing. I come into office and I say, wow, look at how high these prices are. And the Democrats start screaming, affordability, affordability. They're the ones that caused the problem. I'll tell you one thing. They got one good line of bullshit. That's one thing I'll say about it. They are so bad. They are so bad. It's true. Affordability. It's the first time I heard the word. I'm 2 days in, and I watch this sleazebag, one of these crazy congressmen, get up, and he's being interviewed. He said, affordability, prices are too high. I've just got there. But we brought prices way down. They gave us tremendously high prices, and they'll give them to you again. They take over. You have to get out and vote in the midterms because they'll give them to you again. And we're pleased to be joined today by some of those great warriors from the House and Senate, including someone who is representing your great state really well. And I introduced her just briefly before, but she's fantastic. She's a great person, a great senator, Ashley Moody. Thank you for being here, Ashley. Thank you, Ashley. And I also want to introduce Randy Fine, who's back there, Kat Kamek, who's over here, Daniel Webster, who, by the way, is retiring. I don't like that. Where's Daniel? You're around here someplace. Daniel, stand up, Daniel. What a career. He's retiring. And I know we have a good Republican taking your place, if that's possible to take your place. Thank you, Daniel. Great career. We appreciate it. Long time. How many years? A long time. He's been there a long time. A great gentleman. And a man who never stops fighting for the state of Florida. I know it. He is a fighter. Byron Donalds. Byron. Special. Special guy. Thank you. Thank you. He's so far ahead in the polls, I don't have to ask him to come up. I would ask him, but when you know, my theory is when you're up by more than 20 points, I don't want to waste the time, okay? Is that all right? He's killing him. Another great friend of mine, Florida Agriculture Commissioner Wilton Simpson, who's running and going to be great. He's a great guy. And the Florida CFO, Blas Ingolia. Blas, where are you? Yes, Blas, thank you. Thank you, good job. We're also joined by very much of a legend. He's really an amazing, he straightens you out mentally, probably has his own problems, but we don't have to know about that. But we've all grown up watching him. I've watched him for so many years. I did a show before the election, and I thought I was sort of doing him a favor by doing him the show. I said, I'm hotter than he is. Why the hell should I do a show? But I did it, and I have never had such a response as I had on that show. Where's Dr. Phil? Are you here? Come here. Come here, Dr. Phil. No, I did his show. Wow. Come on up here, Dr. Phil. Get up here. Give them a little lecture, but very short. Give them a little lecture on life. Talk about life for 2 minutes or less. Well, hello. I had a different reaction than the president when I told my wife I was coming to the Villages. She said, oh, no. No. Not without me, you're not. Those people are crazy partiers. She says, Robin says, give you her love. She really wanted to be here, but we have grandchildren, so I'm now 5th in line.
By the way, Mr. President, I've given that cognitive test that he took. I used to administer those, where you give them 9,000 divided by 2, 6, 7. I recall one guy did that about the president's age. Took about 6 minutes to go through it. I said, so what's your answer? And he said, a small wire-haired terrier. So great that he got that done. No kidding. Listen, I really do want to take a chance to talk about this a little bit, because what the president is doing here is really something you got to think about differently. He's restoring trust between Americans and the government, because you understand you understand that this was, your benefits were never supposed to be taxed to begin with. That was the deal the American government made with the American people. And from 1935 until 1983, that was the deal. And then they changed the deal. That wasn't what you started with. That wasn't the deal. And President Trump is trying to bring the deal back and say you can trust your government to do what they tell you they will do. President Trump is fighting to restore trust between Americans and the government. And he's trying to right a wrong here. One of the things that President Trump does is he tries फ्लोरिडा में to solve अमेरिकी सदर problems. खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे कि ईरान जंग से जल्दी से निकल आए और मुश्किल दोबारा से खड़ी हो जाए। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के पुर्जे किए जा चुके होते। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान के पास कोई बहरिया, कोई फजाइया, कोई क़यादत नहीं रही। ईरान के 159 बहरी जहाज समंदर की तह तक पहुंचा दिए। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान की क़यादत बाकी ना रहने पर अफसोस है। वो बहुत अच्छे लोग थे। ईरान की पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत मारी जा चुकी। ये बुरे लोग थे। इन्होंने 45,000 मुजाहिरीन को हलाक किया। फ्लोरिडा में वो खिताब कर रहे थे और कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज रुके खड़े हैं। ये जहाज वहां से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। द विलेजर्स फ्लोरिडा में अमेरिकी सदर खिताब कर रहे थे और ये खिताब इस वक्त भी जारी है। और यहाँ आपको बताएं, आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को $4.8 अरब का नुकसान हुआ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन का अंदाजा है कि अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को $4.8 बिलियन का नुकसान हुआ है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। कराची से आपको बताएं, हारूनाबाद साइट एरिया में इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में आग लग गई। 5 फायर टेंडर और वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। कराची में हारूनाबाद साइट एरिया में इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में आग लग गई थी। फायर टेंडर और वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पाया गया है। 5 फायर टेंडर्स और वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। अमरीकी सदर फ्लोरिडा में इस वक्त खिताब कर रहे हैं, लेकिन अब से चंद घंटे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। कहा था कि ईरान से फ़ोन के जरिए बातचीत जारी है। ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे वो इत्तफाक नहीं करते। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा वो ईरान से मुताल्लिक़ सूरत हाल पर खुश नहीं है। वो नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। पाकिस्तान के लिए एक बार फिर एहतराम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए बहुत एहतराम है। जंग ख़त्म होगी तो तेल, गैस और हर चीज़ की कीमतें तेज़ी से नीचे आएंगी।
पाएंगी। आज ईरान के पास बहरिया है ना फजाइया, सब तबाह हो चुके हैं। ईरान की मौजूदा क़यादत कंफ्यूज है, इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं है। ईरानी क़यादत में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। ईरानियों को ये भी आइडिया नहीं कि उनकी क़यादत किसके पास है। अमरीकी सदर ने यह नहीं बताया कि नई ईरानी तजावीज़ में ऐसा क्या है जो उन्हें कबूल नहीं है। So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. The trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. जंगबंदी के लिए ईरान ने नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका को भिजवा दी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी की खबर पर तर्जुमान व्हाइट हाउस एना कैली ने मुज़ाकरात जारी रखने की तस्दीक तो कर दी, ताहम कहा वो बराह रास्त इस खबर पर तबसरा नहीं करेंगी। उनका कहना था कि वो प्राइवेट डिप्लोमेसी पर मीडिया पर बात नहीं करेंगी। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आज सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, इराक़ और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ते किए थे। अब्बास अराग़ची ने उन्हें जंगबंदी के लिए ईरानी इक़दामात से आगाह किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। दोबारा बराह रास्त मुज़ाकरात का फैसला हुआ तो बाज़ाब्ता तौर पर बताया जाएगा। सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान ट्रंप से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ ज़मीनी रास्ते खोल दिए हैं, क्या आप इससे आगाह हैं? ट्रंप ने जवाब दिया वो इस बारे में सब कुछ जानते हैं। साथ ही रिपोर्टर से पूछा क्या वो पाकिस्तानी है। रिपोर्टर के इनकार पर कहा कि वो पाकिस्तान, उसके वजीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. They've made strides, but I'm not sure if they ever get there. सार्फिन के एक बड़े नुमाइंदा इदारे विच मैगजीन के सर्वे के मुताबिक बरतानिया में होने वाली महंगाई से मुतासरा अफराद बाज़ औक़ात खाने में नागा कर लेते हैं। ताहिर इनाम शेख की रिपोर्ट। कंज्यूमर ग्रुप विच के एक ताज़ा तरीन सर्वे में बताया गया है कि महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे के बायस 30 लाख बरतानवी खानदान रकम बचाने के लिए बाज़ औक़ात खाना खाने की भी बचत कर लेते हैं, जबकि 45 लाख खानदान या 15% घरानों ने एशियाए खुर्दोनोश के इस्तेमाल में कमी कर दी है। 85% बालगों का कहना है कि वो सुपर मार्केट्स की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है और खरीदारी के लिए सस्ती जगह तलाश करते हैं। 1/3 ड्राइवरों का कहना था कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस उन्होंने कारें चलाना कम कर दी है। हुकूमत ने कुछ अर्सा पेशतर एशियाई ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कीमतें फरोख्त की एक हद मुकर्रर करने का अंदिया दिया था, लेकिन ईरान की जंग ने सूरत हाल को बिल्कुल बदल दिया है। बेरोजगारी की शरह मजमूई तौर पर 5%, जबकि नौजवानों में 16% तक है, जो कि दहाई में सबसे ज्यादा है। 8% घरानों ने कहा कि वो माली दबाव की वजह से बिल या कर्ज की किस्त अदा नहीं कर सके। सर्वे से पता चला है कि महंगाई ने न सिर्फ लोगों की माली हालत पर असर डाला है, बल्कि वो उनकी समाजी जिंदगी और जिस्मानी सेहत पर भी असरअंदाज हुई है। कैमरा मैन राना सदीबरार के साथ ताहिर इनाम शेख, जियो न्यूज, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। अमरीकी वज़ीर दिफा का जर्मनी से 5000 फौजियों का इनखला का हुक्म। अमल 6 से 12 माह में मुकम्मल होगा।
पेंटागन ने इस बात का ऐलान कर दिया है। अमरीकी वज़ीर जंग का जर्मनी से 5000 फौजियों के इनखला का हुक्म इस अमल में 6 से 12 माह मुकम्मल हो जाएगा। पेंटागन ने ऐलान किया है कि ये अमल 6 से 12 माह में मुकम्मल हो जाएगा। द विलेजेस फ्लोरिडा में सदर ट्रंप खिताब कर रहे हैं। आपको दोबारा लिए चलते हैं। Short period of time, and despite the fact that they embarrassed us in Afghanistan by leaving a lot of equipment behind, those fools, but it was still a lot of equipment, but not a lot compared to what we did. But we rebuilt it during my first term and my first year. And I didn't know we'd have to use it this much, but if you look at what we've done, I mean, Venezuela is considered one of the greatest military movements in history. There's never been anything like it. And frankly, we're doing just about as well in Iran, but I don't like talking about it until the jobs are finished. Let's not talk about anything until it gets finished. But think of it, their Navy's gone, their Air Force is gone, their whole place is gone. And then we get people to say that we're not winning. You know, we get the radical left to say we're not winning. We're not winning. They don't have any military left. It's unbelievable. It's actually, I believe it's treasonous. Okay, you want to know the truth? It's treasonous. So we rebuilt our military. We have the greatest military anywhere in the world, and we've proven that. In Venezuela, we're proving it right now in Iran. They're looking, they're saying, what the hell is this? This should have been done, Iran, by other presidents long before me, and it should have been done by other countries, too. And we got no help from NATO. We got no help, zero from NATO. You know, we spent trillions of dollars on NATO. We got no help. We didn't need it, but we got none. I said, would you like to come? Yeah, you're fired. He said, fire him. No, they know they got problems. No, it was a paper tiger. We got critical race theory out of our schools. We abolished DEI all across our federal government. Our people are prospering again, our country is winning again, and America is respected again, perhaps respected more right now than ever before. And if you go back 1 year, 1.5 years, we were a laughingstock all over the world. We had a president that couldn't walk up a flight of stairs. The whole thing was ridiculous. Couldn't walk upstairs or downstairs. Now, I'm very careful when I say this, because there'll be a day when I may go down, and I don't want to be too strong on that, because if it happens, I want to just pop up and say, hi, everybody, how you doing? But he fell excessively. He fell more than any human. I think he set a record, most falls in history. Nah, he was a laughingstock. The falls were the least of it. He was an absolute, what they did to our country. I'm telling you, we wouldn't have a country. We couldn't have stood another year of it. With the borders, our borders were being, that wasn't people coming, that was an invasion of our country. 11,888 murderers, 50% of which, more than that, killed more than one person. These are the people they allowed into our country. The good news is we're getting them back, and we're getting them out. We're getting them out. And I want to thank Border Patrol, and I want to thank ICE for the abuse that they have to take from the Democrats. That's nice. They'll be happy to hear that. That's very nice. Thank you. They'll be happy to hear that. They watch. I mean, ICE, the job they have, Border Patrol, the job they have. Think of it, the border, 11 months, 0 people came through our border. 0. And those charts are made up by Democrats. They don't even try. The answer is, you know, that used to be thousands, hundreds of thousands of people lined up trying to break into our country. Now there's nobody. You have these plazas, there's nobody in them. They don't, because they know they're not coming in. But the job that Border Patrol and ICE, and then they get
ridiculed and defunded. They will defund your police. If they had free reign, the Democrats will defund your police. We cannot. This is what they're doing with ICE. This is what they're doing with Border Patrol. With the help of our Republican majorities in Congress, we will pass the great health care plan, stop all payments to big insurance companies, and give the money directly to the people to buy their own health care, which will be a much better health care at a much lower price than ours. You're working on that. It's one of the most popular things. You know, the problem is the Democrats will not vote for it because they're owned by these big insurance companies. They're owned, lock, stock, and barrel. We want to pay the money not to the insurance company, but to the people directly to the people, a health savings account, directly into that account, and you go out and buy your own much better health insurance at a much lower cost. Money left over will crush violent crime. We have done an unbelievable job on crime, impose harsh new penalties for repeat offenders, crack down on Marxist prosecutors, rogue judges, and end deadly sanctuary cities, which is basically only to protect criminals. It's a sanctuary for criminals, and we will end one of the worst things that's happened in our country. It's just absolutely hurt our country so badly. No cash bail. They go in, they murder somebody, they're out on the street in another 15 minutes after going into a court. No bail, no cash bail as a disaster. We'll end it, and we will defend America's borders. We'll pass the Save America Act to protect our sacred American election. Because all voters must show voter ID, all voters must have proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment, or travel. And we will also enshrine in permanent law no men in women's sports. And did you ever hear of something like that? You know, I'm just, as I say it a lot. Can you imagine 15 years ago saying that? There will be no men in women's sports. People would say he's crazy. There's something wrong with that guy. It's a real fight. I watched one of these local congressmen the other day saying, we must have men in women's sports. The whole thing is crazy. You ever see the weightlifting records? It's like a 112-pound difference. A record stands for 19 years. And a woman, great athlete, beautiful woman, slightly muscular, slightly, a little bit more than normal, but she's a great weightlifter and stood for 19. They put an eighth of an ounce on one side of the barbell, an eighth of an ounce on the other. She's going for Olympic gold, and she wants to qualify. It's easy. It's going to be easy. She's better than the other women. And she gets up and she works and she works, and my wife hates when I do this. My wife, our great First Lady, how about it? She's a movie star now. Can you believe it? Terrible. I don't know if I'm happy about that or sad about that. But no, she had the #1 movie. You saw that, Melania. And then it was #1 streaming, and I said to her, no family can have 2 stars. What do you think about that, Dr. Phil? No family can have 2 stars, Dr. Phil. This is not a good situation. I don't like it. Dr. Phil would tell me I'm right, but don't say it. No, she's done a great job, but she hates it when I do the thing on weightlifting. She says it's so unpresidential. And she hates when I dance, too, at the end, too. She hates when I dance to what's sometimes referred to as the gay national anthem. You know that. She hates it. You know, that song was #5 32 years ago, and it went to #1 32 years later. There's never been anything like it. Never hit #1. It was #5 32 years ago, and it went to #1 for months during the last months of the game. We love that song. But she goes, darling, please. You know, she's a very elegant woman. She goes, darling, please don't dance. It's not presidential. I said, it may not be presidential, but I'm leading by 20 points in the poll, so something. But she particularly hates the image of me showing sweat and strain of the young woman trying to win the
weightlifting contest against a group of women and one gentleman who decided to go on to the other side. He transferred to the other side. And transgender anyone? And she got up, and her mother was down there. Her mother was so proud with the American flag, a little American flag, like, remember George Foreman, the great George Foreman, had that little tiny flag when he went. She had one of them too, and she was screaming for her child, who was a weightlifter, a real good one, and she got up, and she grabbed it. She grabbed it. Oz is a big physical fitness guy, and she got it. Come on, baby, you can do it. The mother's screaming. The father didn't care because he doesn't believe that his daughter can beat the person that's coming up next. The father's saying there's no way she's beating that guy. So she gets up and and she's ready. Now she's just got to do that fun. She's almost home. 1/8 of a pound more in each. 1/8, just a tiny little bit. Come on, darling. The mother's screaming like crazy. Darling, I love you, darling. Oh, Mom, I can't do it. Boom. Couldn't do it. She failed. She was devastated. And then a young lady comes up who was a young man just a little while ago. And he was actually a very poor, he was a weightlifter, but he was at one of the worst in the country. He was the lowest rung, about as low as you can get. So he transferred over to the other side. And he stood over that big barbell, and he looked at it. The guy could have lifted another 150 pounds. The whole thing is crazy, okay? But the Democrats want men to play in women's sports. And I won't go into swimming or anything else, but the whole thing is ridiculous. And we want no transgender surgery and mutilation of our children. So with the help of everyone in the villages, I only got 97% of the vote. You know, we're still looking for that 3% also. Could all of those that voted for, don't forget, I had to run against two candidates. One was Sleepy Joe, and then he petered out. You know, typically when you're 30 points down, you're not going to win. Think of it. It's like you're in a fight. UFC, the great Dana White, you're in a fight. The fighter's being just absolutely killed, and they take him out, give you another guy to beat. That's not. So they gave me another guy by the name of Kamala. And they said she'll have a 6-week honeymoon period, and then they'll get to know her. And it's true. Remember, she had a little honeymoon period, and she wouldn't do interviews. She wouldn't do. I said there must be something wrong with her. Why wouldn't she do even favorable interviews like Dr. Phil? Dr. Phil would have done an interview. I don't know if he would have been so nice to her. Actually, he might have been tough. He might have been tough on her, Phil. But so then I had Kamala. We beat Kamala by a landslide. Think of it. We won every swing state. We won all 7. They said Trump could win 3 swing states and still win the election. He's leading by so much he could win. We won all 7 swing states. We won the Electoral College in a landslide. We won the popular vote by millions. We won the popular. You know, I hated the first time. We won the popular vote the first time, too, by a lot, by millions. But they had me down a little bit in the popular vote, and they'd always introduce me. Donald Trump, who lost the popular vote. This is the way I got to always introduce. That's why I said, I got to win the popular vote. You know, it's all about the Electoral College. But every time they introduced me, they'd say, ladies and gentlemen, a man who lost the popular vote, but he's president. This is the way I got introduced, you know? So I said, I don't like that. So we won the popular vote by a lot. With all their cheating, that was popular vote AC. You know what AC means? After cheating. We still won it. Because they cheat like hell. That's what they do best. They cheat on elections. Look, if they did, in all fairness to them, if they didn't cheat, it would be impossible to win. You don't win when you have open borders, when you have men and women's sports, when you have the transgender, think of this, transgender mutilization of your children,
oh, please vote for me. I'm all in favor of transgender mutilization of your child. You don't win the kind of things, weak on crime, high on taxes. They voted against all of these tax cuts that we got you. They voted against. They didn't vote against because they thought they were doing something good. They voted against because I was in favor. Anything I'm in favor, I'm telling you, I'm going to run a much different campaign. I'm going to oppose all of those things that are really, really good. We're going to win. We're going to get such Democrat support, you're not going to believe it. They have no clue. But we're going to keep on fighting for American seniors. We've done more for the senior than any other person ever in this office. And we're going to keep on winning for America. We'll honor 250 years of independence, liberty, and freedom. We have it coming up. And we've made our country great. You know, we'll never, ever disrespect MAGA, Make America Great Again. But, you know, when you think about it, Make America Great Again, America is now great. So to say Make America Great Again, but I'm still not getting rid of MAGA. We're not getting rid, because MAGA is the greatest slogan, the greatest branding, the greatest anything in the history of politics of any country. You remember last time, because we were doing so well, I had a potential slogan, Keep America Great. So instead of Make America Great Again, it was Keep America Great. Here's the problem, CAG. I said, that doesn't work, CAG. And I just couldn't get away. And then I did polls. Would you rather have MAGA, Make America Great Again, or CAG? Keep it. And everyone says, we want MAGA, we want MAGA. But what we do have is a new kind of a thing. It's America is back. And that's really true. America is back. Bigger, better, and stronger than ever. It's back bigger, better, and stronger than ever. And just to put it in some words that you've heard before, together we will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America, Dr. Oz, healthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you. Thank you very much. The Villages. Thank you. Thank you. God bless you all. अमेरिकी सदर फ्लोरिडा में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी ख़ानदान में 2 स्टार नहीं हो सकते। कोई भी मर्द ख़वातीन में शामिल हो जाता है और उनसे मुकाबला जीत जाता है। उन्होंने कहा कि जो बाइडन की जगह एक और लड़का मेरे मुकाबले में खड़ा किया गया, जिसका नाम था कैमला हैरिस। डेमोक्रेट्स इलेक्शन में बेईमानी करते हैं। इससे पहले अमेरिकी सदर ये कह रहे थे कि पिछले 11 माह में अमेरिका में आने वाली गैर कानूनी तारकीन की तादाद 0 हो चुकी। बाइडन दौर में अमेरिका में कातिलों की तादाद सबसे ज़्यादा थी, अब अमेरिकी तारीख में सबसे कम है। सदर ट्रंप ने कहा कि रूस और सऊदी अरब जितना तेल पैदा करते हैं, हम उससे दुगना तेल पैदा करते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। रात के अंधेरे में एक नूर देखिए शदाई बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। गायब कहाँ थे आप? आज बड़े अरसे बाद हाथ आए। ना इधर भी पैसा इस्तेमाल हुआ है। मैंने तो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। मैंने जो कुछ भी किया उसकी वैलिडेशन हुई थी ईसी सुप्रीम कोर्ट से। सिर्फ 2% वोट सही निकले हैं। 98% का कुछ पता नहीं किधर है। कुछ बातों का आप भी जवाब दें ना।
मुल्ला उमर ने लिखा है कि मौलाना आपसे मैं अपील करता हूँ एक जिरगा हम बुलाएं। ये मुल्क की सलामती का मामला है। هیڅوک د افغانستان خاوره د چا په ضد نشي کارولای. Economic corridor, one belt, one road. أشكر أخوكم أخي سليم. Did the American want this war? The policy didn't work. देखिए जिरगा हफ्ता और इतवार शब 10:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। गजा के साहली इलाके की मस्जिद खलीलुल वजीर है और आपको मस्जिद का मीनार नजर आ रहा है जो कि शहीद कर दिया गया है। ये मशरकी गजा का इलाका है। यहाँ पर भी बहुत सी मसाजिद को इसराइल के तैयारों की बमबारी से शहीद किया गया। अहलन सहलन फ़लस्तीन। ये बच्ची कह रही है अहलन वसहलन फी फ़लस्तीन, वेलकम टू फ़लस्तीन। मैं इराक के कैपिटल बगदाद में मौजूद हूँ। चेचनिया के कैपिटल ग्रोजनी से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। तोरा बोरा से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। लिबनान के कैपिटल बैरूत से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये जो हिंदुस्तान का अटैक था, इस अटैक में जो वाहिद कैजुअलिटी है, अगर कोई मौत वाक़या हुई है, वो इस कवे की मौत वाक़या हुई है। मैं मीर अली के करीब हूँ। पाकिस्तान से फलस्तीन और लबनान से अफगानिस्तान तक सच्चाई और अमन की तलाश का सफर जारी है और जारी रहेगा। जियो और जीने दो। देखिए कैपिटल टॉक पीर से जुमेरात शब 8:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। एक बारी फिर सोच ले बुलिया। ना बुल्ला होवे लौच गैरत होवे ते माता अपरा छड़ देंदी है। किस्मत अपनी किस्मत से मिलना इतना आसान नहीं। हर बच्चे को उसकी किस्मत से मिलाने का फैसला कर ले तो शायद हम सबसे खुशकिस्मत कौम बन जाए। जरा सोचिए। बढ़ो और आगे बढ़ो। किस्मत वाले के हाथ मिलाने का मौका मिल रहा है, वरना जो मेरे गिरबान की तरफ बढ़े मैं उसके हाथ काट देता हूं। वो मोहब्बत भी क्या है जिसमें जंग ना हो। जंग आमने सामने से लड़ी जाती है। किसी ने तो मैं ना तो मुझे रोक ले। वक्त बहुत कुछ बदल देता है, लेकिन कुछ रिश्ते नहीं बदलते। जैसे आपका माँ बाप से रिश्ता। बचपन के साथियों से बेगरज दोस्ती का रिश्ता। आप दुनिया में कहीं
यकीन से और मजबूत बना देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपका हमसे एतमाद का रिश्ता जो वक्त के हर इम्तिहान पर पूरा उतरा। जियो न्यूज को नंबर 1 रखने का शुक्रिया। नीचे मेहंदी का फंक्शन हो रहा है, कल को शादी हो जाएगी। सोच, अगर तेरी असलियत इस माँ बेटी को मैंने बता दी तो सोच पर तेरे साथ होगा क्या? बस मुझ पर थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए। क्या बात है, यहाँ क्यों आकर बैठ गई? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मुझे घबराहट हो रही है, ऐसे जैसे कुछ गलत होने वाला है। पूरे रास्ते दुआ मांगते हुए आया हूँ कि काश तुमसे अकेले में मुलाकात हो जाए। देखिए रंग दे रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। ईरान के रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुस्तफ़ा ख़ामनेई ने एक तहरीरी बयान में कहा है कि ईरान को अपने दुश्मनों को मायूस और शिकस्त देने के लिए इक़्तिसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। ईरानी रहबर मौज़म ने कहा कि ईरान ने दुश्मनों के साथ फ़ौजी जंग में दुनिया के सामने अपनी तरक्की और बरतरी साबित कर दी है। ताहम ईरान को माशी और सकाफती जिहाद के मरहले में भी दुश्मन को मायूस करना और शिकस्त देना ज़रूरी है। उन्होंने जोर दिया कि ईरानी मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया को तरजीह दें। मज़ीद कहा, तबाशुदा कारोबारों के मालिकान को जहाँ तक मुमकिन हुआ अपने मुलाजमीन को फारिग करने और नौकरियों से निकालने से गुरेज करना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खलीजी ममालिक कतर, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, इराक़ और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और इन ममालिक को अमरीका और इसराइल के खिलाफ जारी जंग के खात्मे के लिए ईरान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। यहूदियों के खिलाफ तासुब वबा की सूरत इख्तियार कर गया है और लंदन में इस सूरत हाल से निपटने के लिए 300 इजाफी पुलिस अफसरान दरकार हैं। इस बात का इजहार मेट कमिश्नर मार्क रॉली ने किया है। तफसील बताएंगे सईद न्याजी। लंदन की मेट पुलिस के कमिश्नर सर मार्क रॉली ने कहा है कि मुल्क भर में यहूदियों के खिलाफ तासुब वबा की सूरत इख्तियार कर गया है, जिससे निपटने के लिए लंदन में मजीद 300 पुलिस अफसरान की जरूरत है। पुलिस ने जुम्मे की सुबह हमले में मुलव्विस 45 साला ईसा सुलेमान पर इक़दाम कत्ल और अवामी मुकाम पर तेज धार आला रखने की फर्द जुर्म आयद की। बरतानिया में दहशतगर्दी के खतरे की सतह को भी जुमेरात की शाम 1 दर्जे बढ़ाकर सीवियर कर दिया गया, जिसका मतलब है कि हमले का इम्कान ज्यादा है। सर मार्क रॉली ने कहा कि इस मौके पर अवाम खौफजदा होने के बजाय चौकन्ना रहें और मालूमात फराहम करके हमारी मदद करें और यहूद मुखालिफ रवैये के खिलाफ आवाज बुलंद करें, क्योंकि इसराइल की खारजा पॉलिसी से आपको इख्तिलाफ हो या इत्तेफाक, इसका बरतानवी यहूदियों से कोई ताल्लुक नहीं। टीजर लगने के बाद जमीन पर गिरे ईसा सुलेमान के सर पर पुलिस अफसरान की तरफ से लाते मारने पर उन्होंने कहा कि अफसरान वही ताकत इस्तेमाल करते हैं जो उस वक्त उन्हें जरूरी लगती है। फलस्तीनियों के हक में होने वाले मुजाहिरों पर पाबंदी के हवाले से उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट का मामला है, लेकिन अगर ऐसा फैसला किया गया तो हम उस पर अमल कराएंगे। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाजी, जियो न्यूज, लंदन। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए जियो न्यूज। वक्त बदल रहा है और खबर देने का जाविया भी। हर मौजू, हर पहलू पर तबसरा होगा एक नए अंदाज से। पाकिस्तान के सबसे मोतबर और जानदार तबसरा निगारों के साथ हर मामले पर फौरी और हतमी राय। ये है सबसे मुनफरिद रिपोर्ट कार्ड। देखिए रिपोर्ट कार्ड पीर से हफ्ता शाम 7:05 सिर्फ जियो न्यूज पर।
देखिए एक दिन जियो के साथ इतवार शब 7:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। खजानों का है मदफन पाक सरजमीन अपनी, यहाँ कोयले के वो ज़खायर है जो मुस्तकबिल करे रोशन। हमारे कदमों तले है दौलत, कहीं पे तांबे के हैं वसाइल, कहीं पे सोना चमक रहा है कोसार और बहर के राहें, तरक्की भी है सलामती भी। ये चार मौसम हर एक जानिब अजब खजाने लुटा रहे हैं। तो आओ मिलकर ये सारी खुशबू नगर नगर में चमकने वाले तमाम जुगनू समेट ले हम, यकीन महकम पे अमल करके ये चांद तारा हसीन कर दे। जमीन के वारिस अमीन बनकर जमीन पे अपनी यकीन कर ले, कर लो यकीन। जानती हो तुम मेरी खामोशियों में इस तरह बसती हो जैसे मेरे इस दिल में धड़कन। मैं अब किसी अपने को नहीं खो सकती। खुदा करे तुम्हें औलाद हो और उस औलाद में तुम्हारी जान हो और तुम कभी आजमाए ना जाओ। बाबा मैं खुद को खत्म कर लूंगा और इस बार मेरी लाश भी नहीं मिलेगी आपको। देखिए नई ड्रामा सीरियल हमराही जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। सफर है सहाफती एहतसाब का, आमरियत से जमहूरियत तक। धरनों, एहतजाज और मुक़य्यद जजों से आजाद अदलिया तक, गहरे पानियों से बर्फ पोश पहाड़ों तक, दुनिया का बुलंद तरीन मैदान जंग। इस सहाफती मुसाफत में छानी है हर जगह की खाक। दानियाल साहब ये आदत छोड़े डिक्टेट करने की, आप इनकलाबी लीडर नहीं है, पार्ट टाइम इनकलाबी लीडर। अब है नया सफर, नई सोच, नए इम्कान। देखिए बनते हुए नया पाकिस्तान शहजाद इकबाल के साथ। देखिए नया पाकिस्तान शहजाद इकबाल के साथ जुमा हफ्ता और इतवार शब 8:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। मैं नहीं जानती कि मैं किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करूं। आप बहुत अच्छे हैं ज़ाविया, और एक वो शख्स है जिसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया। तुमसे पहले मेरी जिंदगी इतनी हसीन नहीं थी, और आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मनपसंद शख्स कैसे आपकी जिंदगी को मुकम्मल कर देता है। क्या कहेगी दुनिया? मेरे भाई का कातिल मेरे भाई की बेवा का आशिक निकला। जैसा इंसान सिर्फ नफरत की काबिलियत समझा तुम। मुस्लिम लीग नून में से शीन निकले थे, आज उनको मुंह की कहानी पड़ेगी। आपने कहा और वो पैरों पे हाथ रखता हूँ मैं झूठ बोला। मेरा राखी मुझे मंजूर है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं नहीं उठता हूं। बोनस ट्राई स्टार बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वाह क्या बात है बोनस की। जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है बोनस ट्राई स्टार बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वाह क्या बात है बोनस की।
जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ऐसा नहीं करेंगे कि ईरान जंग से जल्दी से निकल आए और मुश्किल दोबारा से खड़ी हो जाए। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के पुर्जे किए जा चुके होते। ईरान के पास कोई बहरिया, कोई फ़ज़ाइया, कोई क़यादत नहीं रही। ईरान के 159 बहरी जहाज़ समंदर की तह तक पहुँचा दिए। ईरान की क़यादत बाकी ना रहने पर अफसोस है। वो बहुत अच्छे लोग थे। ईरान की पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत मारी जा चुकी। ये बुरे लोग थे। उन्होंने 45,000 मुजाहिरीन को हलाक किया। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए कहा, ईरान से मुताल्लिक़ ये काम पिछले सुदूर के दौर में कर देना चाहिए था। आबनाए हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज़ रुके खड़े हैं। ये जहाज़ वहाँ से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। शिकवा किया, हमें इस जंग में नेटो से कोई मदद नहीं मिली, हालांकि हम उन पर खरबों डॉलर का खर्चा करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान। कहा, ईरान से फ़ोन के जरिए बातचीत जारी है। ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे वो इत्तफाक नहीं करते। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, वो ईरान से मुताल्लिक़ सूरत हाल पर खुश नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान की मौजूदा क़यादत कन्फ्यूज़्ड है। इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं। ईरानी क़यादत में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। ईरानियों को ये भी आइडिया नहीं कि उनकी क़यादत किसके पास है। What kind of options? How would it look different? I mean, do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. Do you want to go blast the hell out of them? I'd prefer not. On a human basis, I prefer not. Are you preparing 2 strikes on Iran? Why would I tell you that? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग के हक में नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, ईरान के मामले पर हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो ईरान को तबाह कर दें या मुआहिदा कर लें। लेकिन ईरान की तबाही उनकी तरजीह नहीं। इंसानी बुनियादों पर वो ऐसा नहीं करना चाहते। एक और सहाफ़ी ने अमेरिकी सदर से सवाल किया, क्या ईरान पर नए हमले करने जा रहे हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि आपको क्यों बताऊं। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ ज़मीनी रास्ते खोल दिए हैं, क्या आप इससे आगाह हैं? ट्रंप ने जवाब दिया कि वो इस बारे में सब कुछ जानते हैं। साथ ही रिपोर्टर से पूछा, क्या वो पाकिस्तानी है? रिपोर्टर के इनकार पर कहा, वो पाकिस्तान, उसके वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। We have great respect for Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now. In terms of the negotiation telephonically, they've made strides, but I'm not sure if they ever get there. ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान सफारतकारी का रास्ता खुला रखने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि अमरीका को धमकी आमेज़ लहजा और तौसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। मुज़ाकरात के इनेकाद का फ़ैसला हुआ तो बाज़ाब्ता तौर पर बताया जाएगा।
होर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को $4.8 अरब का नुकसान हुआ। ईरानी रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई ने कहा है कि दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इक़्तिसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। अपने तहरीरी बयान में उन्होंने कहा कि ईरान ने जंग में दुनिया के सामने दुश्मनों पर बरतरी साबित कर दी। ईरानी आवाम मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया को तरजीह दें। कारोबारी अफराद को चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने से गुरेज करें। अमरीकी वज़ीर जंग का जर्मनी से 5000 फौजियों के इनखला का हुक्म। अमल 6 से 12 माह में मुकम्मल होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ये फैसला बज़ाहिर ईरान जंग पर यूरोप से बढ़ते इख्तलाफात के तनाजुर में किया गया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरान जंग पर अमरीका पर कड़ी तनकीद की। फितना खवारिज की खैबर पख्तूनख्वा की शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाजोड़ के इलाके मामून में खवारिज ने क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाडकॉप्टर से बुज़दिलाना हमला किया। हमले के वक्त ग्राउंड में खेल जारी था। 3 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना खवारिज और अफगान तालिबान को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। उधर बन्नू के इलाके दरपा खेल में कबाइल और फितना खवारिज के दरमियान फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। RPO के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 शहरी जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। HPLPSL 11 के दूसरे एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। किंग्समैन के फास्ट बॉलर हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में 6 रन का कामयाब दिफा किया। किंग्समैन के 186 रन के जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 184 रन बना सकी। इवेंट का फाइनल इतवार को पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची में कोरंगी रोड पर डिफेंस थाने की हुदूद में 2 अफराद नौजवान पर तेजाब फेंककर फरार। मुतासरा नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात जारी। कराची की पीपल्स चौरंगी पर इलाका मकीनों का बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग पर एहतजाज बफर जोन 16A और गुलशन वसीम के मकीनों ने किया। कहा लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से जायद कर दिया गया है। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा जारी। तरक्याती कामों का मुआयना किया। मंगोपी टाउन में रोड का जायजा लिया। कहा जल्द ही काम मुकम्मल करके सड़क आवाम के लिए खोल दी जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी, अपडेट करेंगे। अमेरिका ने यूरोप ने अपने इत्तेहादी ममालिक से कहा है कि उन्हें बरामद किए जाने वाले असलहे की तरसील में ताख़ीर हो सकती है क्योंकि अमरीकी असलहा ईरान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हो रहा है और उसके ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बरतानिया, पोलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया के हुकाम को असलहे की तरसील में ताख़ीर से आगाह किया है। लंदन में अमरीकी सफारत खाने ने बरतानिया में मुकीम अमरीकियों को अवामी मकामात पर जाने में मोहतात रहने की हिदायत की है। इससे पहले बरतानवी हुकाम ने बताया था कि मुल्क में दहशतगर्दी खतरे के सतह बढ़ गई है। बरतानवी हुकाम ने ये फैसला शुमाली लंदन में यहूदियों पर हमले के बाद किया था। उसका मतलब ये है कि अगले 6 माह में बरतानिया में इंतहा पसंदों के हमले का इम्कान बहुत ज़्यादा है। लंदन में अमरीकी सफारत खाने ने कहा है कि बरतानिया में इस्लाम पसंद और दाएं बाजू के इंतहा पसंद दहशतगर्द ग्रुप्स की जानिब से खतरात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे डॉक्टर माहिर बेंजी ने खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग 2026 के दौरान खित्ते की माशी तरक्की को नुमाया तौर पर सुस्त कर देगी और पाकिस्तान समेत तेल दरामद करने वाले ममालिक को तवानाई और खुराक की बढ़ती कीमतों, तरसीलात ज़र में मुमकिना कमी और सख्त मालियाती हालात जैसे संगीन खतरात का सामना होगा। ताहम फंड के मुताबिक पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम ताहाल दुरुस्त समत में है और माशी इस्तेहकाम के लिए मोहतात मालियाती पॉलिसी, सख्त मॉनेटरी नज़्म ज़ब्त और जारी इस्लाहात नागुज़ीर हैं।
डॉक्टर माहिर बेंजी ने पॉलिसी इदारा बराए पायदार तरक्की में खिताब के दौरान IMF की अप्रैल 2026 की इलाकाई इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट भी पेश की। डॉक्टर बेनेजी ने बताया कि 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग ने एक शदीद और हिमा जहती माशी झटका पैदा किया, जिसके नतीजे में तवानाई की मंडियाँ, तिजारती रास्ते और मालियाती हालात मुतासिर हुए हैं। इन हालात के बायस आलमी तरसील के निज़ाम, खुराक और खाद की कीमतों पर भी मनफी असरात मुरतब हुए हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक सीज़ फायर और बड़े तनाव में कुछ दिन रुकावट के बाद एक बार फिर झड़पें शुरू हो गई हैं, जहां पर ये देखा गया है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा और जो सरहद है पाकिस्तान की, उसमें मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। अब ये जो एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश हो या फिर मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बनाया जाना, इसमें इजाफा क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान मुख्तलिफ अटैम्प्ट्स कर चुका है, अस्करी ऑपरेशन यानी एग्जॉस्ट कर चुका है पाकिस्तान, वो भी करके देख लिया, फिर बिला वास्ता बिल वास्ता मुज़ाकरात करके देख लिए, लेकिन जो तनाव है, कशीदगी है, इसमें किसी तरह से कमी नहीं आ रही, बल्कि गाहे गाहे दोबारा छिड़ जाती है ये मामला। क्या हल हो इसका? क्या इक़दामात करने चाहिए जिससे तनाव कम हो सके या इसका कोई हल निकल सके? अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए एजाज सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बेनज़ीर शाह साहब अभी हमारे साथ हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा सर, ये हमने देखा कुछ मुख्तसर सा इसमें वक्फा आया, लेकिन एक बार फिर अब ये सिलसिला तेज़ी पकड़ रहा है, शिद्दत पकड़ रहा है क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज का। इस वक्त इसमें तेजी की वजूहात आप क्या समझते हैं, और फिर क्या इसका कोई मुस्तकिल हल है? बदकिस्मती से आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यही बात है कि कुछ अरसे के लिए अमन हुआ और फिर से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई हैं, और इस मसले का मुस्तकिल हल है। कई बार पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बताऊँगा, लेकिन बात शुरू करने से पहले ये ज़रूर ज़हनों में रखिए कि अब इसराइल, भारत और अफ़गान हुकूमत का गठजोड़ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उनके फ्रंट मैन हैं ये दहशतगर्द तंजीमें। तो लिहाजा ये जो ज़बान समझते हैं उसी ज़बान में इनको जवाब मिलना चाहिए। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैडम शेख, मैं पूछना चाहता हूँ हुकूमत से कि अफ़गान महाजरीन को जो वापस भिजवाया जा रहा था उसका क्या बना है, बात कहाँ तक पहुँची है? मैं पूछना चाहता हूँ हुकूमत से कि दुनिया भर में अफ़गानी जो जालीपन से हमारे पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को बदनाम कर रहे थे, मतलब हमारे पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवा कर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे थे, इसके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन शुरू हुआ था, वो मामला कहाँ तक पहुँचा? और मैडम शेख, हमने दहशतगर्दी हमलों तक बाइकआउट किया हुआ था अफ़गान हुकूमत का, मुआशी और तिजारती, और सरहद सील की हुई थी, तो उसका मामला कहाँ तक पहुँचा? और मैडम शेख, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि तनाव ख़ात्मे के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, जो आपका सवाल है और जो आपने अभी ज़िमनी सवाल किया, उसका एक और आसान लफ्ज़ों में हल है कि दहशतगर्दी ख़ात्मे तक, जब तक अफ़गान सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रहती है, हमारा अफ़गानिस्तान से, अफ़गान अवाम से कोई झगड़ा नहीं है। वो हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन वहाँ 20-21 दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, और जब तक दहशतगर्दी हमारे ख़िलाफ़ होती रहेगी, जब तक वो दहशतगर्द तंजीमें अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलावर होती रहेंगी, तब तक हमें अफ़गानिस्तान का मुआशी, तिजारती और सफारती बाइकआउट करना चाहिए, और तब तक दहशतगर्दी के ख़ात्मे तक मुकम्मल सरहद सील करनी चाहिए, और दहशतगर्दी के ख़ात्मे तक
हमें ऑल आउट जाना चाहिए दहशतगर्दों के खिलाफ और दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ जो हम जा रहे थे। ये जो सीज़ फायर है, ये जो वक्ती जंग बंदी है, ये मसले का हल नहीं है। हम समझा कर थक गए, हम मुज़ाकरात कर के थक गए। यूरोप, अमेरिका और बरतानिया, सिर्फ हम नहीं, यूरोप, अमेरिका और बरतानिया कह चुके कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मतलब सलामती कौंसल में बात हो चुकी कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द जो हैं वो पूरे खित्ते के लिए ख़तरे का बायस हैं। लिहाजा हमें ईरान, चीन और वस्ती एशियाई रियासतों को मिलाकर मुकम्मल तौर पर ऑल आउट जाना होगा इन दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़। और जैसा मैंने अभी कहा कि इसराइल, भारत और अफ़गानिस्तान का गठजोड़ हो चुका है। बहुत सारे सबूत हैं हुकूमत पाकिस्तान के पास, रियासत पाकिस्तान के पास। इन्होंने हर फोरम पर ये सबूत भी दिए, अफ़गान हुकूमत को भी सबूत दिए और बताया कि यहाँ जो आप सारे मिलकर हम पर हमलावर हो रहे हैं, तो ना सिर्फ पूरी दुनिया को बताएं कि ये क्या हो रहा है, बल्कि जो हमारे अमेरिका से अच्छे तल्लुकात हैं उनको भी इस्तेमाल करें इस दहशतगर्दी के खिलाफ और इन दहशतगर्दों के खिलाफ। सीज़ फायर, बातचीत, मुज़ाकरात, ये चलने वाला काम नहीं है। ऑल आउट जाएं दहशतगर्दों के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ। यही वो ज़बान समझते हैं दहशतगर्द, और इसी से मसले का हल निकलेगा। एजाज सैयद साहब, हम लोग ऑल आउट जाके भी देख चुके थे। ईद से पहले ऑपरेशन हो रहा था और अपेरेंटली उसके अंदर बड़ी दूर तक ना सिर्फ कार्रवाइयाँ की गई बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर भी कार्रवाइयाँ की गई। बट फिर हम देख रहे हैं एक हाइएटस के बाद दोबारा से सब कुछ शुरू हो गया है। फिर एक और कल परसों वाक़या हुआ जिसको पाकिस्तान ये कहता है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है अफ़गानिस्तान ने। ये जो रीसेंट ट्रिगर हुए हैं इवेंट्स, ये इसकी वजह क्या है, ये क्यों हुए हैं और ये क्या बताता है कि क्या इस तनाव का इस वक्त कोई हल मुमकिन है और किस तरह से हो सकती है कोई ऑप्शन? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, पहली बात तो यह है कि आज जो तालिबान की हुकूमत है, अगर सिर्फ इससे शुरू कर लें, यानी कि ज़्यादा पीछे मत जाएं, अगर पीछे जाते हैं तो उसके ऊपर भी बात हो सकती है। आज जो तालिबान की हुकूमत है उसे इंस्टॉल करने में मरकज़ी किरदार जिन मुल्कों ने, जिन एक्टर्स ने किया है, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। हमारी जो एग्जेक्टिव है, हमारी हुकूमत के सरबराह ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर क्या तकरीरें की थी। हमारे हुकूमत के हों लोग उस वक्त की या अपोजिशन के लोग हों, किस तरीके से तालिबान को हीरो बनाकर पेश करते रहे और उन्होंने आके क्या पॉलिसी अपनाई, ये मेरे और आपके सामने है। 26 अप्रैल को यहाँ पर दहशतगर्दी हुई है, आपने और मैंने देखा। 29 अप्रैल को यहाँ पर दहशतगर्दी खत्म हुई, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, वो मैंने और आपने देखा। ये जो दहशतगर्दी हो रही है उसके एक्सटर्नल रीजंस भी हैं और उसके इंटरनल रीजंस भी हैं। इंटरनल रीजंस की अगर आप बात करते हैं तो सबसे अहम बात यह है कि आपके एक सूबे में एक ऐसी गवर्नमेंट है जो आपके साथ फॉरेन पॉलिसी के इस अहम तरीन इशू के ऊपर साथ बैठी नहीं हुई। और खाली वो गवर्नमेंट नहीं है, आप उस गवर्नमेंट के साथ साथ उस गवर्नमेंट की जो अपोजिशन जमातें हैं, कोई भी एक सियासी जमात देख लें जो पाकिस्तान की मरकज में इक़्तिदार की हिस्सेदार है, जब वहां पर ऑपरेशन की बात होती है तो आप देख लें उन तमाम लोगों का मौक़िफ़ क्या है। क्या हम उन तमाम सियासी जमातों का जो इक़्तिदार में हैं या इक़्तिदार से बाहर हैं उनसे मिल बैठने के लिए और मिल बैठकर कोई चीज़ें तय करने के लिए तैयार हैं? आंसर इज़ नो। और हम ये समझते हैं कि टेररिज्म हमारा ख़त्म हो जाएगा जिस तरह बिजली बंद करने के लिए या जलाने के लिए एक स्विच दबाया जाता है, वो दबाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, दबाएंगे तो वो दोबारा ऑन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये बड़ा पेचीदा मामला है, इसके लिए मुतल्लिका एक्सपर्ट्स चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जितनी व्हाट डू यू मीन बाय मुतल्लिका एक्सपर्ट्स? ये जो आप मुशावरत की कमी, मुतल्लिका एक्सपर्ट्स की बात करें ना, इसको थोड़ा सा ब्रीफली एज पॉसिबल बट थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा, क्योंकि हमने देखा मुख्तलिफ थिंक टैंक्स ने तो इस बात का भी इजहार किया कि पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया है इसकी वजह से खुदकुश हमलों में कमी आई है। इस बात का भी इजहार किया गया कि पाकिस्तान ने जो स्टेप्स लिए हैं रिसेंटली उसके कुछ ना कुछ दहशतगर्दी मुल्क में कमी हुई है। 2018 से ऑनवर्ड वहां पर नूर वली महसूद बैठे हुए हैं, वो टारगेट नहीं हो सके। ये इस बात का जवाब क्या है?
मुझे ये बताएं, अगर वहां पर आप कार्रवाई करते हैं और देखें वो भी दूधों धुले नहीं हुए, वो भी पाकिस्तान के बारे में जब प्रोपेगेंडा किया जाता है तो वो आगे आगे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैं तालिबान की बात कर रहा हूं और वो भरपूर प्रोपेगेंडा करते हैं। अभी आप देखिए ना कि आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं, एक मिनट माजरत एजाज साहब, क्यों नहीं ये जो स्टेक होल्डर्स या हाई वैल्यू टारगेट्स है ये टारगेट हो रहे, आप क्या समझते हैं, अभी भी कंफ्यूजन है कहीं या क्या वजह है? नहीं, मेरे ख्याल दो तीन चीजें हैं। मेरे ये ख्याल है कि एक तो एक इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स होने की बहुत बड़ी जरूरत है। अच्छा। फिर हमारा इंट्रोस्पेक्शन होने की बड़ी